Question 2. Sin x is equal to 3 upon 5. X lies in second quadrant. X lies in second quadrant. See here, A C S T. It is second quadrant. X का है second quadrant. This is second quadrant. Sign positive है, positive है. Now this is P upon H. Take P is equal to 3k, H is equal to 5k. What is base? Base is equal to under root H square minus P square. You will get 5k square minus 3k square. 25k square minus 9k square, you will get 16k square, you will get base is equal to 4k. Now sin का उल्टा होता है cosec x, that is 5 upon 3. वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और cosec पॉजिटिव होता है. नाउ सेकंड लेते हैं अपन sin cos x base upon hypotenuse. What is base? Base is 4k. 4k upon base is 4k and height is hypotenuse is 5k. K cancel. It is in x in second quadrant, so it is negative. So what is cos x? Cos x is equal to minus 4 upon 5. Cos का उल्टा क्या होता है? Cos का उल्टा होता है sec x. Sec x is reciprocal of cos. This is also negative x in second quadrant. Now fourth is tan x, that is p upon b. What is p? 3k upon base is 4k. Base is 4k. So it is 3 upon 4. X in second quadrant. X किस में है? Second quadrant में. So it is negative. X tan इधर क्या होता है? Negative. So tan x is equal to minus 3 upon 4. Now what is cot x? Cot x is reciprocal of tan. So it is minus 4 upon 3. Now I will take question number 4 ले लेते हैं. Question number 4. Question 4. Sec x is given to you 13 upon 5. X lies in fourth quadrant. X lies in fourth quadrant. Now see here, x किस में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव दिया है. क्यों दिया हुआ है? ACST. इधर x कहाँ लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ लाई कर रहा है. तो ये पॉजिटिव होता है. Now it is hypotenuse upon base. H you can take 13k, B you can take 5k. Then what is P? P is under root H square minus B square. 13 का स्क्वायर माइनस 5k का स्क्वायर अंडर रूट. So it becomes 169k square minus 25k square, 144k square. So P is equal to 12k. P is equal to 12k. Now sec का रेसिप्रोकल क्या होता है? अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. sec का रेसिप्रोकल होता है cos x. Cos x means 5 upon 13. पॉजिटिव ही रहेगा.
because it is fourth quadrant. It is fourth quadrant positive. फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. Now I will take sin x. Sin x is p upon h. P is 12k. H is 13k. So 12 upon 13. So फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x क्या होगा? x किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो it is negative. So sin x is minus 12 upon 13. Sin का रेसिप्रोकल cosec. It is minus 13 upon 12. This is also negative because x in fourth quadrant and फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos और sec पॉजिटिव होता है. cos और sec are positive. Now cos and sec are positive. फोर्थ लेते हैं अपन tan x p upon p. p upon b. p is what? 12k. Base is what? 5k. That is 12 upon 5. Now it is negative because x in fourth quadrant. So tan x is equal to minus 12 upon 5. Now cot x fifth. Cot x is equal to minus 5 upon 12. Reciprocal of tan. It is also negative. Now I will take one more question. That is question number 5th. Question number 5th. Write down. Question number 5th. Tan x is given to you minus 5 upon 12. X in second quadrant. X in second quadrant. See here A C S T. सेकेंड क्वाड्रेंट x का है यहाँ सेकेंड में, तो क्या पॉजिटिव होगा? साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, इसलिए tan नेगेटिव है. नाउ व्हाट इज p? दिस इज p अपॉन b. यू हैव टू फाइंड h. p is 5k, b is 12k, h is equal to under root p square plus b square. So 5k square plus 12k square, 25k square plus 144k square, 169k square. That is p is equal to. Now reciprocal of tan is cot x. Base upon perpendicular, minus 12 upon 5. Reciprocal of cot is 10. Now I will find sin x. Sin x is p upon h. What is p? 13k upon. What is p? P, this is h. What is p? 13 upon. P is 5. 5 upon 5k upon 13k. This is cancel out. x किस में दिया हुआ है? x in second quadrant. सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है. It is positive. x in second quadrant. So it is positive. तो sin x हो जाएगा 5 upon 13. Now similarly sin पॉजिटिव है तो क्या पॉजिटिव रहेगा? If sin is positive, then cosec x is positive. So it is 13 upon 5. Now fourth, cos. Base upon hypotenuse. What is base? Base is 12. 12 upon 13. It is 12 upon 13. X in किस quadrant में है x? Second quadrant. So it is negative. It is negative. Only sin cosec positive होता है, तो cos x is equal to minus 12 upon 13.
जब cos x नेगेटिव है तो sec x भी नेगेटिव होगा एंड रेसिप्रोकल ऑफ cos